session, I took reactivity series of metal, and we have very well understood why some metals are more reactive than the other metals and why some metals are even more reactive than hydrogen, and why we have placed hydrogen in the reactivity series. These all things I have taken in my last session. So in today's session, we will begin with the reaction of metals with the salt solutions. So here we will learn that a more reactive metal displaces the less reactive metal. Is it a new topic to cover? Absolutely not, because you have covered this topic in your chapter 1 chemistry, that is chemical reactions and equations. But there you have only learned the reactivity series. In this chapter, you have very well understood why potassium is placed in topmost reactive metal and why gold is placed in the least reactive metal, right, children? So here, what are we going to take? We will be taking a salt solution of metal B, right? It chemically reacts with metal A, then it will form a corresponding solution of metal A and metal B. But this reaction is only possible when metal A is more reactive than metal B. What if metal A is less reactive than metal B, children? If metal A is less reactive than metal B, the resultant will be no reaction, right? Because A has to be more reactive than metal B to displace metal B from corresponding salt solution. The logic is very simple. More reactive metal can displace the less reactive metal. So here we have a copper sulfate solution in which we are putting some zinc granules. So copper sulfate solution is blue in color, whereas zinc granules are silvery white in color. So these are also known as displacement reactions, and displacement reactions are always indicated by which characteristic of chemical reaction? That is your color change, right? So here we can clearly see earlier the solution was blue, but now the solution has turned colorless. Why the solution has turned colorless? Because a new compound is formed with entirely new properties. And what is that new compound? That is zinc sulfate. अब इसको आप आयनाइजेशन के कॉन्सेप्ट से भी समझो. अब हो क्या रहा है, ये आयंस में स्प्लिट हो रहा है, आयनाइजेशन हो रही है, Cu2 plus and SO4 2 minus, right, children? And here we are having Zn2 plus. So here zinc ions are more reactive than copper ions. So we can see that because zinc is placed high in the reactivity series and it is placed above copper. So which clearly states that zinc is much more reactive than copper. So zinc ions are more reactive. More reactive का क्या मतलब है? They can donate their electrons very easily as compared to the copper. So here, children, zinc ions are going to displace the copper from its corresponding salt solution, thus forming zinc sulfate. And the color of the zinc sulfate is it is not exactly having no color, so we call it a colorless solution. And a red brown copper deposition comes over zinc, right, children? So this indicates the displacement reaction, and most of the displacement reactions are characterized by color change, right? Now, if we move towards the next reaction, that is again copper sulfate blue color. Now, this time you're instead of putting zinc, you're putting iron into it. So here with this reactivity series, right, we can see that iron is placed above copper. So what does it signify? It signifies that iron being more reactive than copper. So जब ये ionize होगा, so iron ions are more reactive. तो वो ज्यादा reactive है, इसकी वजह से वो copper को displace कर पाएंगे and thus forming a corresponding salt, that is ferrous sulfate. So आप कभी भी कोई iron nail आप पुट कर सकते हैं कॉपर सल्फेट में. सो यू विल सी द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट ब्लू solution turns into greenish solution, and the iron will be coated with a brown flaky substance, and that red brown color compound, the substance is always a copper, right? Because copper का जो अपना कलर होता है वो क्या होता है, रेड ब्राउन होता है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड रिएक्शन, अगर हम थर्ड रिएक्शन को देखते हैं, that is silver nitrate. It itself is colorless. ये colorless है. And when you're putting the copper flakes into it, right, copper particles into it, so what happens? Copper being more reactive. So you can see here, copper being more reactive than silver. So copper ions can easily displace silver from its corresponding salt solution, thus forming blue color copper nitrate solution. And
a grayish white silver is formed along. So children, one of the reaction you will surely expect in your exam, because this is the same topic which is being there in your chapter 1 and chapter 3 as well. But chapter 3 में आप थोड़ा और conceptually समझते हो, because अभी तक आप ये समझ चुके होते हो कि why few metals are more reactive, because the vigor of the reaction decides, then the strength of the reaction decide, the strength of the acid depends, the strength of the acid actually decides the vigor of the reaction. The amount of hydrogen bubbles which are produced during the reaction absolutely tells us the which metal is more reactive and which metal is less reactive. तो बहुत सिंपल सी बात है समझने वाली, that these metals are the way they respond in a given reaction decides their reactiveness over the list of metals. Now moving ahead, अब हम आगे चलते हैं. So this is all we have learned. Now we are going to learn the reaction of metals with chlorine. So what is so specific about it? So whenever they react with chlorine, they form the corresponding chlorides, right? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन पड़ेंगे, उसमें corresponding hydrides बनेंगे. क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, इसमें corresponding chlorides बन रहे हैं. तो अगर आप इसको ध्यान से देखते हो बच्चा, so sodium metal, when you're passing a chlorine gas over sodium metal, what happened? The two reacts and as they form sodium chloride. And this is what? This is ionic chloride, children. ये ionic chloride है. अब मैंने आपको ionic compounds के लिए अभी क्या समझाया था? Ionic compounds वो compounds होते हैं जो metal and non-metal से मिलके बने होते हैं. So if you look at sodium chloride, here sodium is a metal, whereas chlorine is a non-metal, right? So such kind of compounds which are formed by metal and non-metal are said to be ionic compounds. The compounds which are formed by give and take of electrons are said to be ionic compound. So here sodium chloride is an ionic chloride. Now when we are talking about calcium, similarly calcium also behaves, right? It reacts with chlorine to form calcium chloride. And what will be the nature of this compound? This is also an ionic chloride. Why? Because it is made up of metal, which is calcium, and non-metal, which is chlorine. Right, children? Now moving ahead. With this, we have finished all the reactions of metals with chlorine, hydrogen, water, dilute acids. So here we have completed our chemical properties of the metals. Now, chemical properties of non-metals are going to tell you about the behavior of non-metals when they react with different elements or compounds. So first of all, here we are going to start the reaction of non-metals with oxygen. So we have learned when we were learning the reaction of metals with oxygen, they form the basic oxides. And you know the reason why? Because when they form the corresponding oxides and those oxides are dissolved in water, they form the hydroxides, right? So hydroxides are basic in nature. So here when non-metals react with oxygen, they form acidic as well as neutral oxide. So जो non-metals होते हैं वो दोनों तरीके के oxides बनाते हैं, acidic oxides भी बनाते हैं और neutral oxide. So we learn all the cases, right? So first we are whenever you burn carbon in the presence of air, right, in sufficient quantity of oxygen, right, in sufficient supply of oxygen, it always forms carbon dioxide. And this is an acidic oxide. Now you must be wondering, ma'am, आप इसको acidic oxide क्यों बोल रहे हो? Here there is a catch. When carbon dioxide is dissolved, carbon dioxide is a gas which is soluble in water. But when it dissolves in water, it reacts with water to form a weaker acid that is known as carbonic acid. And this acid is there in your all fizzy drinks. जो भी आप cold drinks पीते हो, जितने भी आप carbonated drinks पीते हो, aerated drinks consume करते हो, इन सारे ही drinks में कौन सा वाला acid होता है that gives that fizziness, right? That is carbonic acid. So that is why we say that non-metallic oxide always forms the acidic oxide, right? But they also form neutral oxide. अब इसका आगे example हम neutral oxide का, when you're burning carbon in sufficient supply of oxygen, it forms carbon dioxide. But when you burn carbon in insufficient supply of oxygen, instead of forming carbon dioxide, it starts forming carbon monoxide. And carbon monoxide is neutral in nature. But this is a lethal gas, children. Carbon dioxide gas causes global warming, right? Whereas carbon monoxide gas causes
It is a poisonous gas. It may also cause death, right? This is a lethal gas. But कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल ऑक्साइड है. बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो एक वीक एसिड फॉर्म करता है, दैट इज कार्बोनिक एसिड. तो I've listed many differences here between carbon dioxide and carbon monoxide. Carbon dioxide is formed. Please, you can also make a note of it. Carbon dioxide is always formed when carbon is burned in sufficient supply of oxygen. Carbon monoxide is formed when carbon is burned in insufficient supply of oxygen, right? Carbon dioxide causes global warming, whereas carbon monoxide causes the poisoning in human body and it becomes a lethal gas, right? Carbon dioxide is an acidic oxide and carbon monoxide is a neutral oxide, right, children? So we have learned so many differences between carbon dioxide and carbon monoxide. Now moving ahead and see other examples. If you're taking an example of a sulfur, sulfur is again a non-metal. Whenever you're going to burn that sulfur metal, right, in non-metal into in the presence of oxygen, it forms sulfur dioxide, which is acidic oxide. ठीक है, वो क्या है? एक एसिडिक ऑक्साइड है. और सल्फर डाइऑक्साइड को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वो भी एक वीक एसिड बनाती है, दैट इज सल्फ्यूरस एसिड. इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स भी होते हैं, बिकॉज जब उन्हें वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो तो वो वीक एसिड फॉर्म कर रहे हैं. सो दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दैट व्हेनेवर यू आर गोइंग टू बर्न कार्बन in insufficient supply of oxygen, it forms carbon monoxide, which is neutral in nature. Now, hydrogen is also a non-metal. Whenever you are going to react hydrogen with oxygen, right, it always forms what? It forms water, and water is a neutral oxide. Water को हम hydrogen oxide भी बोलते हैं, right? And this is neutral in nature. So yes, non-metals form acidic oxide as well as non-metals form neutral oxide. तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा ही बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे, बट जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स भी बना सकते हैं और वो बेसिक ऑक्साइड्स भी फॉर्म कर सकते हैं. नाउ मूविंग अहेड, do non-metals react with water? Do they also react with dilute acids? No, children. Non-metals cannot react with water. So whenever you get any example, like carbon को अगर मुझे water के साथ react करवाना है, carbon is a non-metal, so the resultant will be no reaction because non-metals कभी भी water के साथ react नहीं कर पाते. वाटर के साथ रिएक्ट करने के लिए दे हैव टू गिव electrons, right? They have to be cations, but non-metals does not form cations. They form what? They form anions, right? और कार्बन के केस में तो शेयरिंग हो रही है, neither it is forming cation nor it is forming anion. आप सल्फर का केस ले लो, सल्फर एनायन है, तो जब तक वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा वो खुद टू रिड्यूस, राइट, हाइड्रोजन आयंस टू फॉर्म वाटर, सो इट विल नॉट रिएक्ट विद वाटर. सो नॉन मेटल्स क्या नहीं दे सकते? नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकते टू रिड्यूस हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर इनटू द हाइड्रोजन गैस. नाउ चिल्ड्रन, व्हाई दे कैन नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड? रीजन इज सेम, राइट? नॉन मेटल्स कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन. अब डाइल्यूट एसिड्स के साथ अगर कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट करता है, डाइल्यूट एसिड तो आयोनाइज हो गया, अब बट उसको आयोनाइज करने के लिए हाइड्रोजन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर substance होना चाहिए so that to take away the hydrogen ions from the acid, but non-metals are not having enough strength to remove the hydrogen ions from the corresponding acid, dilute form of acid, hence the result is no reaction. इसीलिए वो कभी भी कोई भी रिएक्शन नहीं करेंगे. तो नॉन मेटल्स वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं कर सकते. नॉन मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि वो डाइल्यूट एसिड्स में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं. सो दीज आर द टू रीजंस, राइट, each respectively, that why non-metals cannot react with water or dilute acid. Now moving ahead, do they react with a salt solution? Yes, children, they can definitely react with the salt solution because this reaction of a salt solution shows the displacement of the non-metals, right? So displacement of the non-metals, जिन बच्चों को नहीं पता है, वो chapter 1 में जो मेरा वीडियो है displacement reactions जिसमें मैंने explain किया हुआ है, उसमें जाके समझ सकते हैं. मैंने पूरा displacement and reactivity of non-metals वहां पे discuss किया हुआ है. They can refer there. So reaction of non-metals with salt solutions.
See, here we have sodium bromide reacting with chlorine. So chlorine being more reactive non-metal than bromine, so it is going to displace the bromine from corresponding salt solution, thus forming what? Sodium chloride. And which gas is evolved? Bromine gas is evolved. Right, children? So chlorine gas का color क्या होता है? Pale green, and bromine is red brown gas. So here also you can see a color change within the two gases. Now reaction of non-metals with chlorine. Yes, they react with chlorine, but they do not form the ionic chloride. Rather they form the covalent chlorides. Why we are saying so? Because ionic chloride कैसे बनते हैं बच्चा? You know two things about ionic chloride. What are those two things? जब भी आप ionic chloride बनाते हो, first they are formed with metal and non-metal. राइट दूसरा आपको क्या पता है इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स राइट ये किससे बनता है हमेशा गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है बट कोवेलेंट क्लोराइड के केस में ऐसा केस नहीं है कोवेलेंट क्लोराइड के केस में इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड विद टू नॉन मेटल्स राइट एंड टू और मोर नॉन मेटल्स भी हो सकता है जब भी आपका कोवेलेंट कंपाउंड बन रहा है एंड मोर ओवर इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो शेयरिंग को हम और अच्छे से समझेंगे बट अभी के लिए आप इतना समझिए राइट जब मैं आपको बॉन्डिंग वाला टॉपिक करवाऊंगी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स नीदर वी आर गिविंग नॉर वी आर एक्सेप्टिंग मीन्स वी आर यूजिंग इट टुगेदर so that is what known as sharing of electrons so when two different elements shares the electron means they are using those electrons together for their own stability that is what known as covalent bonding उसको हम क्या बोलते हैं covalent bonding तो यहाँ पे क्या हो रहा है हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया क्लोरीन के साथ बट कैसे किया इसमें आयनाइजेशन नहीं होगी राइट बट इसमें क्या हो जाएगा दे विल शेयर ईच अदर इलेक्ट्रॉन एंड दे फॉर्म HCl राइट जब मैं कोवेलेंट बॉन्डिंग आपको सिखाऊंगी तो मैं आपको इसको बॉन्ड करके भी सिखाऊंगी कि इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग हो कैसे रही है बट अभी के लिए आप क्या समझेंगे कि कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो हमेशा नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं और दे आर ऑल्सो फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो अब बहुत क्विकली हम समझते हैं फॉस्फोरस इज अ नॉन मेटल इट इज when we pass chlorine gas from the phosphorus it forms phosphorus trichloride ये क्या बना रहा होता है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड विच इज अ कोवेलेंट क्लोराइड सो एक बहुत सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है अगर आपको पता करना है फॉर एग्जाम्पल आप सारी चीजें याद नहीं रख सकते हो बट आप सब चीजें समझ जरूर सकते हो सो इफ यू नीड टू अंडरस्टैंड इफ दे गिव यू एनी कंपाउंड एंड यू नीड टू फिगर आउट whether the compound is an ionic compound or covalent compound very simple basic to understand is if the compound is formed between a metal and a non-metal then that compound will surely be a ionic compound but if that compound is formed between two or more non-metals then that compound is a covalent compound so with this we are clear about the covalent chloride so अब आप बहुत अच्छे से ब्रीफ कर सकते हो आप बता सकते हो कि ये हमारे मेटल जो दिस इज हाउ आर मेटल्स बिहेव एंड दिस इज हाउ आर नॉन मेटल्स बिहेव सो फार अभी तक हमने ग्रेड 6, 7, 8 एंड 9 में हम नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ उन्हें डिस्टिंग्विश करते आ रहे थे बट ग्रेड 10 इज द फर्स्ट एवर क्लास जिसमें बच्चों को ये सिखाया जाता है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव केमिकली उनका केमिकल बिहेवियर क्या है हाउ डू दे बिहेव व्हेन दे आर गोइंग टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन हाउ डू दे बिहेव व्हेन दे आर गोइंग टू रिएक्ट विद वाटर हाउ डू दे बिहेव व्हेन दे आर गोइंग टू रिएक्ट विद एनी corresponding salt solution how do they behave when they react with chlorine hydrogen how do they behave when they react with different forms of water so you have through the whole journey आप ये सब समझते आए हैं एंड while learning आपने इनका बिहेवियर समझा आपने इनकी रिएक्टिविटी समझी यू हैव अंडरस्टूड कि ये जो मेटल्स होते हैं some are vigorous right they are superly active superly excited and some are moderate and some are absolutely not reactive वो रिएक्ट करते ही नहीं आप उनको कैसा भी टेम्परेचर कंडीशंस दे दो राइट कैसा भी आप उनको यू मे गिव मोर अमाउंट ऑफ हीट और लेस अमाउंट ऑफ हीट सो दे विल नेवर रिएक्ट सो दैट सच सॉर्ट ऑफ मेटल्स आर सेड टू बी
the least reactive metal. Then you have seen about the non-metals also. Non-metals का behavior आपने समझा. तो ये सारे behavior non-metals कैसे होते हैं? Acidic oxides होते हैं. They form neutral oxide. Salt solution में react कर लेते हैं. But वो किसके साथ react नहीं कर पाते? Water के साथ नहीं react कर पाते because they cannot donate electrons. Second, वो acids के साथ भी react नहीं कर पाते. Why? Because they cannot displace that hydrogen ions. क्योंकि acid के साथ react करने के लिए foremost condition है जो भी एलिमेंट एसिड में से हाइड्रोजन आयन को डिस्प्लेस कर देगा वही एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है. अदरवाइज और कोई भी एलिमेंट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता है. सो this makes you clear about the properties, chemical properties of metals and non-metals. Wind up today's session, and in next session I'm going to get you the chemical combination and why does a metal and a non-metal undergoes chemical combination, why do they need to chemically combine. We'll understand the two types of bonding, ionic bonding and covalent bonding. So stay tuned and keep learning forever.